जन गण मन अधिनायक जय हे। भारत संविधान भारत भाग्य विधाता। जम्मू कश्मीर हिमाचल पंजाब दिल्ली हरियाणा यूपी उत्तराखंड बिहार गुजरात मराठा ओडिशा उत्तर पूर्व द्राविड़ कर्नाटक तेलंगाना आंध्रा केरल उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल तावी यमुना गंगा सरस्वती कृष्णा ब्रह्मपुत्रा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा सर्वधर्म नागरिक भारत भाग्य विधाता। जन गण मंगल दायक जय हे। भारत संविधान भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय भारत वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। सुजलम सुफलम मलया शीतलम साहस्या श्यामलम मातरम वंदे मातरम। This is Suraj Singh from Faridabad NCR, Bharat, India. This is 17th February 2020. Today I just want to briefly discuss about current situations that are undergoing in our country, Bharat. Now, Bharat, India. Just for a break, I am talking about current situations because I was in mood of project management, but it was because something else. Specific things have happened, specific developments happened in this country in relation to CA protests, CA, NRC and NPR protests which have been undergoing, and particularly Shaheen Bagh in Delhi, big population of Shaheen Bagh, and generally big women folk who are leading this revolutionary movement. I can call it revolutionary because this is led by powerful strength of people of public of this country, and particularly women folk of this country. हमारे देश की आज जो हालत है, एक ऐसी चाल जिसे कहा जाए पब्लिक की चाल, सरकार की नहीं, देश की जनता की चाल। देश की जनता जो उस देश की मालिक है, भारत, इंडिया, वो देश की जनता जिसने 1950 में हमारे देश के संविधान को बनाया था, उसको समझा था, उसको पास किया था, उसको नियमित किया था और स्वयं को दिया था स्वयं के द्वारा। वो संविधान जिसका वास्तविक अधिकार जनता का है, वो संविधान जिसको जनता पूजा के समान समझती है, पूजा की वस्तु के समान समझती है, जिसको अपना धर्म समझती है, वो संविधान जिसके बराबर कोई संविधान नहीं दूसरा दुनिया में, और हमारे देश में एक ही संविधान जिसको इस देश का राजा कहा जाता है। ऐसा राजा जो किताब में है, ऐसा राजा जो देश की आत्मा की शक्ति में है, देश की जनता की आत्मा है, जिसमें शायद समझा नहीं था लोगों ने, पहले अलग बात थी, लेकिन जब आँख खुलती है तभी सवेरा दिखाई देता है। तो आज वो समय 2020 चल रहा है, 70 साल के पश्चात इस संविधान के पैदा हुए कि लोग इसको अपना बच्चा समझ बैठे हैं, अपना माता पिता समझ बैठे हैं। अरे अच्छी बात है, भारत का संविधान भारत की इज्जत है,
मान सम्मान है, भारत की कीर्ति है, जो पूरे विश्व को रास्ता बताती है कि देखिए आगे कैसे चला जाए। वो बात अलग है कि स्वयं आगे चलने में हम फेल हैं। उन लोगों की वजह से जो राजनीति करते हैं, राजनीति की दुकानें करते हैं, राजनीतिक संस्थाएं चलाते हैं, राजनीति की इंडस्ट्री चलाते हैं, ऐसे लोग जो इस देश के वास्तविक दुश्मन रहे हैं और हैं। अगर इस संविधान का कोई दुश्मन है, वो राजनीतिक दल हैं जो अपने स्वार्थ के लिए, अपनी गद्दी बचाने के लिए, अपनी हट चलाने के लिए संविधान को एक कूड़ा समझ के बैठे थे, लेकिन शपथ इसकी लेते थे। शपथ लेने के बाद इसकी वैल्यू नहीं होती है, ये हम सब जान चुके हैं। चुनावों को भूल जाइए, चुनाव तो चलते रहते हैं। सवाल जनता का अपना है, जनता का स्वयं का चुनाव किया है इस देश के लोगों ने। जब से CAA आया है, नागरिकता कानून में संशोधन हुआ है। नागरिक कानून संशोधन एक ऐसा राक्षस बन चुका है पब्लिक के लिए, सरकार के लिए, जिसका हल नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि ये संविधान के विरुद्ध हुआ है। सब जानते हैं, कोई माने या ना माने उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सच तो यह है कि ये गलत है, गलत है तो गलत है। कोर्ट क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, उसको भूल जाओ। हम भारतीय जनता स्वयं एक कोर्ट है, स्वयं एक न्यायालय है, क्योंकि हम संविधान अपनी जिम्मेवारी पर हमने बनाया है, और बाकी सब हमारे नीचे आते हैं। चाहे वो कोर्ट हो, वो चाहे आपकी पार्लियामेंट हो या सरकार हो, कोई भी हो, ये सब हमारे नीचे आते हैं। हमारे बिना इनकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर भारतीय जनता नहीं है तो इनकी कोई वैल्यू है ही नहीं। ये कुछ भी बैठे रहे अपने आप। अब तो हमारे कुछ जजों ने सुप्रीम कोर्ट के भी कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट को ताला लगा दो, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। कितनी शर्मनाक बात है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार अपने हट चलाती है, इसको ताला लगा दो। हमारी सरकार जो पैसा भी देखिए कितनी गुलाम है सरकार। कुछ कंपनियां जिन्होंने 1.5 लाख करोड़ देना है सरकार को, उससे लेना नहीं चाहती थी। कमाल की बात है ना। देखिए, कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी लेना नहीं चाहती थी। आप उसे सरकार कहेंगे, लुटेरा कहेंगे, आप फैसला कीजिए, मैं नहीं करूंगा। 1.5 लाख करोड़ छोटा हिसाब नहीं है। 1.5 लाख करोड़ 3-4 कंपनियों ने देना है, वो दे नहीं रही थी, ये ले नहीं रही थी, दोनों मिले हुए थे। इसका मतलब तो यही है। हमारे देश में इस तरह के नेता हैं जो खुल्लम खुल्ला चोरी कर रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं, और जनता शांति से बैठी देख रही है। कितनी शर्म की बात है। हम लोग अपने ऊपर शर्म भी नहीं करना चाहते। हम देश के इतने नालायक बच्चे हैं, माता, अपने भाई बहन सब इतने नालायक, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोई लूटता है तो लूटता रहे, कोई प्राइवेट चीजें बेचता है, गवर्नमेंट चीजें बेचता है तो बेचता रहे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्रधानमंत्री खुल्लम खुल्ला हरी झंडी दिखा रहे हैं, चोरी के सामान को ले जाओ, चोरी कर लो, ट्रेन को खुल्लम खुल्ला हरी झंडी दिखा रहे हैं, और हम देख रहे हैं। कोई चिंता नहीं किसी को, भारत की जनता को। आप सबसे अच्छी तो वो शहीद भाग की महिलाएं हैं जो लड़ तो रही हैं। आप क्या कर रहे हैं? आपने पहले भी नहीं किया था जब स्वतंत्रता संग्राम होता, अब भी नहीं करना चाहते आप, क्योंकि आपको फ्री का सामान चाहिए, फ्री की जीत चाहिए आपको। जीते कोई, जिम्मेदारी आप ले लेंगे, हमने जीता है। शर्म आती है मुझे भारत की जनता के उन लोगों को जो दूर रखते हैं अपने आप को, जो सरकार के पीछे लग्गू बने बैठे हैं। दिल्ली की जनता ने दिखा दिया, लेकिन दिल्ली की जनता ने भी सही नहीं दिखाया। मैं जानता हूं दिल्ली की जनता चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन नहीं किया। कोई बात नहीं, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। सवाल ये उठता है कि आखिर हम किस तरफ जा रहे हैं? क्या सरकार ने वोटर को खरीद लिया है? क्या हम बिक चुके हैं? हमने अपने आप को राजनीतिक दलों में क्यों बांध के रखा हुआ है? क्या राजनीतिक दल हमारे माँ बाप हैं? हमको इन्होंने पैदा किया है? क्वेश्चन उठे नहीं, उठने चाहिए। हम पागल कुत्ते क्यों बन चुके हैं सब के सब? हमारे दिमाग से ये एक गलत फहमी निकलती क्यों नहीं है कि लोकतंत्र वास्तविक में व्यक्ति का होता है, लोकतंत्र पब्लिक का होता है, नेता का नहीं। नेता का लोकतंत्र नहीं होता, लोकतंत्र पब्लिक का होता है। जो हमारा संविधान हमें शक्ति देता है, हमें सोवरेन बनाता है, प्रभुसत्ता संपन्नता देता है, हमें गणतंत्र देता है, दोनों मिलकर लोगों के लिए होता है। किसी प्रधानमंत्री के लिए या किसी नेता के लिए नहीं होता, किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं होता। हम बस एक गलतफहमी पाले हुए हैं। अनपढ़ लोग किताब खोल के देखते नहीं है। अगर कुछ खुली भी तो प्रियम्बल के पेज खोला बस अभी तक, उसके आगे कोई घुसना नहीं चाहता। चाहे वो स्वतंत्रता, चाहे ये लोग आंदोलन भी कर रहे हो, ये भी शायद उससे आगे निकल नहीं पा रहे हैं। अब देखिए हमारे नेता, जिनको हम कह रहे हैं नेता, हालांकि नेता मैं नहीं मानता उनको, जिसको ये लोग मिलना चाहते थे, लाखों करोड़ लोग धरने पे हैं,
लाखों करोड़ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं सीए का, लेकिन सरकार कहती है जो हमने कर दिया, हमसे बात ना करो। अब आप उसको सरकार कहेंगे जो अपनी पब्लिक से बात ना करना चाहे? शर्म आती है मुझे ऐसे सरकार पर, ऐसे मंत्री, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या मंत्री हो। अरे अगर लोग बैठे हैं, महिलाएं बैठी हैं, लाखों लोग बैठे हैं, रोज धरना दे रहे हैं, तो क्या आपका फर्ज नहीं उनसे मिले जाके? आप वोट मांगने क्यों जाते थे उनसे? वोट मांगने के लिए तो आप कभी भी जाएंगे, लंबी लंबी बातें करेंगे, पैर भी छुएंगे, रोड शो भी करेंगे, और वही जनता अगर आपसे मिलना चाहते हैं, कि आपकी ड्यूटी नहीं है उनसे मिलना जाके? आपको पता नहीं है कि धरना चल रहा है, स्टेज चल रहा है, आंदोलन चल रहे हैं जगह जगह? मतलब आपके अंदर इतने भी एथिकेट्स नहीं है, इतने भी आपके अंदर इतना भी दिल नहीं है कि आप अपनी जनता से मिलने, जिसने आपको इस सीट तक पहुंचाया। नहीं तो आपकी औकात क्या है कि आप इस सीट तक पहुंच जाते? आपकी वैल्यू क्या है? आपने ऐसा क्या किया कि आपको प्रधानमंत्री मिनिस्टर बना दिया गया? ऐसी कौन सी योग्यता है आप में? एक ऑर्डिनरी, एक साधारण मानव है आप भारत के, और कुछ नहीं है। ज्यादा नागरिक जैसे एक आम नागरिक होता है, रिक्शा वाला, तांगे वाला, आप भी उससे ज्यादा नहीं है। तो उसमें क्या ऐसी खास बात है कि आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए या आपको मिनिस्टर बना दिया है, और आपको इतना घमंड कि आपके पास समय नहीं है लोगों से बात करने के लिए? आप दुनिया के टूर कर सकते हैं, दुनिया भर में जाकर उद्घाटन कर सकते हैं, रेल को झंडी झंडी दे सकते हैं। शर्म आती है मुझे आपको प्रधानमंत्री कहते हुए, या आपको गृह मंत्री कहते हुए, जो भी हैं आप। आपको पब्लिक के पास टाइम नहीं है। और जब पब्लिक मिलने जाए आपसे, 15 किलोमीटर चल के मिलने भी जाए, तो आपके पास समय नहीं है उनके लिए। लानत है आपके ऊपर कि ऐसे मंत्री हमारे देश के हैं। अरे आपका कर्तव्य था, आप स्वयं जाते उनसे मिलने, अपने किसी सांसद को भेजते, बात करते उनसे, चाहे वो गलत होंगे या सही होंगे, बात उसकी नहीं है, वो आपकी पब्लिक है। मुझे अच्छा लगा उन औरतों ने कहा कि हम 10 आदमी क्यों भेजते हैं, 10 औरतें क्यों भेजते बात करने के लिए, हम तो सारी आएंगी। जब वोट मांगने आए थे तो 10 आदमियों से वोट मांगा था क्या आपने? अच्छी बात है, लॉजिक अच्छा है। अरे आपने मिस किया है मौका, अवसर मिस किया है। आप बड़े बनते अगर उनसे मिल लेते, या जाके उनसे मिलते, आपको जाना चाहिए था उनके पास। आप इतने बड़े नहीं है कि वो आपके पास मिलने आए। बड़े तो वो है क्योंकि उन्होंने आपको सीट पे बिठाया है। आप क्या है? आप कुछ नहीं है। वोटर बड़ा होता है, याद रख लेना। मत अधिकारी बड़ा है इस देश का, नेता बड़ा नहीं है, लीडर बड़ा नहीं है, मिनिस्टर बड़ा नहीं है। ये बात आपकी बुद्धि में नहीं आती, क्योंकि बुद्धि आपकी बंद है, ताला लगा है बुद्धि को। आपको जाना चाहिए तो ये बात 2 महीने हो गए, इनको शर्म नहीं आती है। आपको किस देश के मिनिस्टर हैं आप मंत्री कहलाने के योग्य नहीं है। अरे 2-3 दिन हो जाते तो मंत्री को नींद नहीं आती है, आपको तो आ रही है। जम्मू कश्मीर 6 महीने से आपने बंद किया हुआ, आपको नींद आ रही है। कमाल की नींद, आपके घोड़े बेच के सो रहे हैं आप। ऐसे मिनिस्टर को तो मुझे मिनिस्टर कहते हुए बड़ा दुख होता है कि किस जानवर को मिनिस्टर बना दिया हमने। जानवर आप में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है आप में। मेरी बात है आपको बुरी लगेंगी, लगे, मेरे को चिंता नहीं इस बात की, सच बोलने में क्या बुराई है। और ये कांग्रेस उल्लू, कोई चिंता नहीं है उसको भी, मतलब वो भी बीजेपी कांग्रेस एक ही चीज आज की तारीख में। लड़ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सामान बेचा जा रहा है देश का, आग लगाई जा रही है देश में, कोई चिंता नहीं किसी को। अरे हमें किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। भाड़ में गए सारे राजनीतिक दल, फेंक दो उनको, कीचड़ में आग लगा के फेंक दो सबको। हमें नहीं चाहिए राजनीतिक दल देश के अंदर, हमें इनकी आवश्यकता नहीं है। ये सब लोग चोर लुटेरे बदमाश मिले हुए हैं, इनकी दुकानें चल रही हैं, इनके होटल चल रहे हैं, यही इनकी राजनीति है। इनका काम चलना चाहिए, इनको वोट मिलना चाहिए, बाकी जनता जाए भाड़ में, किसी से कोई लेना देना नहीं है। आज देश में ऐसा कोई नहीं है जिसको राजनीतिक नेता कहा जाए, सब ऐसे ही अपने मतलब के हैं। कोई भी हो, चाहे A to Z, सब ऐसे ही है। मैं किसी को नेता नहीं मानता आज की तारीख में। नेता कोई है तो देश की जनता है। अब देश की जनता अगर नेतागिरी करनी है भाई, तो जागे फिर रहना, सोना मत दोबारा। ये सरकार है ही नहीं आपके पास, ये सब गुंडे लुटेरे बैठे हैं, इन्हें कोई लेना देना नहीं जनता से। चाहे कांग्रेस वाले हो या बीजेपी वाले हो, इनको कोई मतलब नहीं जनता से। अगर आप इतने लोग गए थे मिलने तो 1 मिनट 2 मिनट बात कर सकते थे उनसे, लेकिन नहीं करेंगे। हम नहीं देते परमिशन। साला परमिशन तुमसे लेंगे मिलने के लिए, इतने बड़े हो गए तुमसे परमिशन मिलने के लिए ली जाएगी? हम आपके मालिक हैं, हम आपसे आपकी इज्जत बड़ी कि हम आपके मिलने आए, लेकिन आप मिलना नहीं चाहते। इतने बड़े हैं आप इंसान ही नहीं हैं, जानवर हो। अरे इतनी बूढ़ी औरतें आपसे मिलना चाहती हैं, आपके मिलने के लिए फुर्सत नहीं है, इतने बिजी हैं आप। पुलिस को आगे कर देते हैं, जाइए इनको रोकिए। मतलब आपको खाली वोट लेने होते हैं बस, उसके अलावा आपको कुछ लेना देना नहीं पब्लिक से, कोई मतलब नहीं पब्लिक से। आप इंसान नहीं हो, मैं फिर कह रहा हूं। आप देश में आग लगाना चाहते हैं, और लगेगी आग अगर ये हाल रहा तो।
जब तक हाजमा ठीक रहता है, हजम होता रहता है, जब हाजमा खराब होता है तो पेट खराब होता है। और वो समय आ रहा है, मुझे लगता है वो आ रहा है समय। आप जैसे लोगों के लाते मारे जाएंगे, घुसे मारे जाएंगे, वो याद आएगी आपके पास। आप नेता नहीं हो, नेता होते नहीं ऐसे। पब्लिक से ऊपर समझते अपने आप को। कब से ऊपर हो गए आप? कोई औकात नहीं है आपकी पब्लिक से ऊपर होने की, कोई ऐसी हैसियत नहीं है आपकी। आप वोट से जीत के आए हो, मत भूलना। आप अपनी पढ़ाई से, अपनी नॉलेज से, अपनी विशेष यज्ञता से जीत के नहीं आए हो। विषय नहीं है आपका कोई ऐसा किसमें यज्ञ किया हो आपने कि मैं बहुत बड़ा वैज्ञानिक हूँ, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, मैं राजनीतिक शास्त्र का डॉक्टर हूँ, वास्तव मैंने इकोनॉमिक में पीएचडी की है या मैंने कुछ और किया है, मेरे बिना काम नहीं चलेगा इस देश का। ऐसी कोई योग्यता नहीं है आप में। आप तो भिखारी हो वोट मांगने के। और अभी तो वोट मांगने की इच्छा करते हो आप, और क्या करते हो आप सारे भिखारी हो, सब वोट मांगते हो, हमसे मांग के हमें आंखें दिखाते हो। हम नागरिक नहीं है, आप ऐसे प्लान बनाते हो। शर्म आती है मुझे तो ऐसे नेताओं को। पता नहीं नेता क्यों कहा, ये शब्द कहां से आया कि हम लोगों ने नेता नाम इनको दे दिया। कब दे दिया, किस सन में दे दिया, कहां पे दे दिया, मेरे को आज तक समझ नहीं आया। संविधान में मैंने एक एक अक्षर पढ़ के देख लिया, मुझे कहीं नेता दिखाई नहीं दिया। संविधान के प्रेम से लेकर संविधान के आखिरी आर्टिकल तक, आखिरी अंश तक मैंने एक एक आर्टिकल पढ़ के देख लिया कि नेता कहाँ डिफाइंड है। मुझे लीडर या नेता कहीं नहीं दिखा कि कौन पार्टी का नेता होता है, कौन पार्टी का नेता नहीं होता है, सरकार नेता होती है कि नेता नहीं होती है। मुझे नेता शब्द कहीं दिखाई नहीं दिया। मुझे राजनीतिक पार्टियां होती ये भी दिखाई नहीं दिया। मुझे प्रधानमंत्री का चुनाव होता है ये भी नहीं दिखाई दिया। पता नहीं मैं कैसे बेवकूफ बना रहा इतने 70 सालों तक कि मैं इनको नेता मानता रहा, इनको मैं प्रधानमंत्री का चुनाव मानता रहा, या मैं क्या मानता रहा, मेरी समझ नहीं आया। कभी नहीं आया, आज भी नहीं आया, अभी तक नहीं आया। अगर किसी को आया तो भाई मुझे समझा देना कि नेता किसे कहते हैं, प्रधानमंत्री का चुनाव किसे कहते हैं, और राजनीतिक पार्टी संवैधानिक है ये किसे कहा जाता है। मेरी आज तक समझ नहीं आया। लोगों के दिमाग से खोलना पड़ेगा, इस गंद को बाहर से निकालना पड़ेगा कि दिमाग में जो घुसा के बैठे हैं वो ये नेता है हमारे। हमारा कोई नेता वेता नहीं है इस देश में। नेता भारत की जनता है, उसके नौकर है सारे। हम हैं नेता इस देश के, क्योंकि हम संविधान चलाते हैं, हम देश चलाते हैं, हम टैक्स देते हैं, हम आपको खाना देते हैं, तो हम आपके नेता हैं। आप हमारे नेता नहीं है। भारत का एक एक नागरिक भारत का नेता है। ये पीएम कुछ नहीं है, ये सब गिल्ली डंडा खेलने वाले लोग हैं। इनको लात मार के भगाया जा सकता है, कुछ नहीं उनकी औकात। हम इनको औकात बना के खामा खा बैठे हैं। चाहे वो पीएम हो या सीएम हो, तो हमारे सिर्फ नौकर हो, कुछ नहीं। इससे ज्यादा पैसे लेते हो, काम करते हो, एहसान नहीं करते, और हम एहसान कराना भी नहीं चाहते। तुम्हें पैसे देते हैं, जितने मांगते हो उतने देते हैं, जितनी फैसिलिटी चाहते हो उतनी देते हैं। और क्या लोग एहसान नहीं कर रहे हमारे ऊपर, काम कर रहे हो। हम आपको चुन के भेजते हैं, काम कीजिए, नहीं तो भाग जाइए, आपके बस का नहीं है तो। लेकिन नहीं, हम फिर भी नेता मानेंगे उसको, क्योंकि हमारे दिमाग में भूत सवार है, भूस भरा है। हम रोटी नहीं खाते, हम मिट्टी खाते हैं, हमारे दिमाग काम नहीं करते हैं। ये हमारी प्रॉब्लम है, नेताओं की नहीं। मुझे तो घमंड है, अब बढ़ता जा रहा है उन लोगों पे, उन औरतों पे, महिलाओं पे जो आंदोलन कर रही हैं। महिलाओं का आंदोलन कोई छोटी बात नहीं होती। महिलाओं का आंदोलन 15 किलोमीटर चल के जाना, चलो चलने की भी कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं। हिम्मत तो है, हिम्मत को नमस्कार किया जाता है। साहस है उनमें, साहस। साहस या श्यामलम, साहस या श्यामलम वंदे मातरम में कहा जाता है। साहस या श्यामलम, अरे आप कृष्ण की तरह हो, साहस तो है। आप राम की तरह हो, साहस तो है। वो शक्ति तो आप में है, चाहे थोड़ी से ही। आप कम से कम चेतावनी तो देते हो नेताओं को। इनको चेतावनी देना जरूरी है, बाकी जरूरी नहीं है। इनकी औकात कुछ नहीं है। ये पुलिस की शक्ति से आपको मार सकते हैं, आपको पकड़ के जेल में डाल सकते हैं, लेकिन आपको झुका नहीं सकते। ये कोर्ट से गलत फैसला भी करा सकते हैं अपने फायदे के लिए, लेकिन कोर्ट भी आपको झुका नहीं सकता। अब तो लोग नागरिकता का मतलब समझने लग गए हैं। कुछ समझ रहे हैं, कुछ नहीं समझ रहे हैं कि नागरिक किसे कहते हैं। वो ये सब भूल जाते हैं कि भारत का संविधान किन्होंने बनाया है। इस बात को लोगों को समझ अभी तक नहीं आया है। पढ़ते जरूर है हम भारत के लोग, लेकिन समझते नहीं है। समझ जाते तो ये बात नहीं होती कि हम भारत के लोग, तो क्या मतलब है। हम भारत के नागरिक है तभी तो लोग हैं। हम भारत के नागरिक हैं, एक्चुअली हम कहा जाता है हम भारत के लोग, हम भारत के नागरिक। अपनी पूर्व निष्ठा से हम इस अपने भारत देश को ये संविधान देते हैं, अपने आप को पास करा के, अपने आप को नियमित करा के।
अपने को समझ के अपने को सेव देते हैं, और किस हिसाब से देते हैं वो हिसाब भी साफ साफ दर्शाया गया है। हम प्रभु सत्ता संपन्न रहेंगे, हम सामाजिक हिसाब से रहेंगे, समाजवाद से रहेंगे, हम प्रभु सत्ता रहेंगे, समाजवाद रहेंगे, पंथ निरपेक्ष रहेंगे, लोकतांत्रिक रहेंगे, गणतांत्रिक रहेंगे। ये चीजें हैं हमारी। आप सोच लीजिए, प्रभु सत्ता संपन्नता प्लस समाजवाद प्लस प्लस धर्म निरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता प्लस लोकतंत्र प्लस गणतंत्र, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भारत देश है, भारत देश का नागरिक है, भारत देश की जनता है, क्योंकि भारत देश के नागरिक को ये अधिकार प्राप्त हैं। फिर मैं बता देता हूं कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। सोवरन, प्रभु सत्ता, उसके बाद समाजवाद सोशलिज्म, उसके बाद आपका धर्म निरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता सेकुलरिज्म, और लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिज्म, और गणतांत्रिक यानी रिपब्लिकनिज्म। ये अधिकार हम सबको प्राप्त हैं, ये गारंटीड अधिकार है। और हमें क्या गारंटी देते हैं? ये हमें गारंटी देते हैं कि हम न्याय व्यवस्था को बनाएंगे, सामाजिक न्याय हो, आर्थिक न्याय हो या राजनीतिक न्याय हो। हम आपको स्वतंत्रता देंगे लिखने की, बोलने की, चलने की, फिरने की, पूजा पद्धति करने की, विश्वास करने की, और हम आपको स्वतंत्रता देंगे बराबरी की और पदों की, किसी में फर्क नहीं समझा जाएगा। और ये इसलिए किया जाए कि आप सब मिलजुल के रहें, सारे लोग, इस देश के सारे नागरिक, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी धर्म की आड़ के, बिना किसी जातिवाद के, बिना किसी ऐसी चीज के जो आपस में मतभेद लाए, ऐसी किसी चीज को छोड़ के, यहाँ कोई धर्म की वैल्यू होगी ना किसी जात की वैल्यू होगी, जहां तक बराबरी की बात होगी। जब ये संविधान हमको देता है सब, तो हम नागरिक नहीं है क्या? अरे ये संविधान क्या अमेरिका वालों ने बनाया था? वहां की जनता ने बना के हमको दिया है पास करके, या इंग्लैंड की जनता ने पास करके दिया है, या गल्फ की जनता ने पास करके दिया है, या अफ्रीका की जनता ने पास करके दिया है, या फार ईस्ट की जनता ने पास करके दिया है, यूरोप ने पास करके दिया है? किसने पास करके दिया है ये? क्या वो लोग नागरिक है यहाँ के? ये भारत की जनता ने पास करके स्वयं को दिया है। इस बात को हम समझ लें तो उतना अच्छा होगा। ये फालतू की बकवास छोड़ दें। संविधान साफ साफ कहता है कि भारत का नागरिक है हम सब। संविधान साफ कहता है, प्रियम्बल ही कहता है, बाकी तो आप छोड़ दीजिए। और बाकी आर्टिकल साफ साफ कहते हैं, आप पढ़िए आर्टिकल खोल के, आर्टिकल 325, 326, 327, जहाँ चुनाव के बारे में कहा गया है, और साफ साफ कहा गया है कि जिस व्यक्ति का नाम चुनाव की लिस्ट में है, वोटर की लिस्ट में है, वो उस देश का नागरिक है। उसी के हिसाब से आपको वोटर कार्ड दिया जाता है। वोटर कार्ड का मतलब वोट का अधिकार का कागज दिया जाता है। तो नागरिक तो आप हैं ही। ये तो आपको भ्रम में डालने की बात है। आप डर नहीं है, इस बात को डरने की जरूरत नहीं है। इनको होश में लाना है जो बोल रहे हैं कि आप नागरिक नहीं। हम तो होश में हैं, हम तो होश में हैं। होश में तो उनको लाना है जो अंधे बने हुए हैं, जो बेगू गूंगे बने हुए हैं, बहरे बने हुए हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं, दुनिया में दिखाते हैं, और गलतियां सारी खुद करते हैं। चाहे वो कश्मीर के इशू की गलती इन्होंने की हो, इन्होंने सीए की गलती की हो, एनआरसी की गलती की हो, या सरकारी सामान बेचने की गलती की हो, सारी गलतियां तो ये कर रहे हैं और दिखा रहे हैं हमको बहुत अच्छे देश के भक्त है। ये देश के आपका राष्ट्रवाद मानते हैं। राष्ट्रवाद नहीं है ये भ्रमवाद है। ये भ्रमवाद में रखना चाहते हैं हमको। लूटते जा रहे हैं सब कुछ, और लूटने दे रहे हैं हम भी लूटने दे रहे हैं, और विरोधी दल भी लूटने दे रहे हैं। अफसोस की बात है कि सारे के सारे किसी में शक्ति नहीं है बोलने की। सारे सारे अंधे भी हैं, गूंगे भी हैं, बहरे भी हैं, हथेली पीटने वाले भी हैं। हथेली पीटने वाले कौन होते हैं आपको समझ जाना चाहिए, कहने की जरूरत नहीं है। We people of this country have forgotten what we are. We have forgotten our identity. We have forgotten our power. We have forgotten our strength. We have forgotten that we got freedom from someone, from British. We forgot that. We only remember that we are enjoying this country, and these people have challenged us. These people have been challenging us that you are not sitting in this country. I salute those revolutionist movement and public of Shahid Bagh like these places who have been engaging, who has been engaged, who are fighting, who have been struggling for their rights. Means not only their rights, our rights as well. Those people who are in revolution and those people who are doing revolution from homes, they are doing for whole people, all society of this country, whole society of this country, 140 crore people or 130 crore people. They are fighting for everybody. And these shameless leaders, so-called leaders, I don't call them leaders, they are not leaders, they are just ministers and not leaders. These people don't have time to talk to people. Shame onto them, all to them, from prime minister to lowest person. They are all shameless guys
who cannot even talk to people when there is a problem with them or they people have grievances. These people cannot talk to, but they can go to them for votes when votes are required. Is they are only interested in votes, not in solving problem of public. And the same Prime Minister says, I'm rigid on that. Prime Minister, this is not your father's country, this is a public country. You rigid on who values, who bothers about you? Okay, we don't accept your law, do whatever you want to do. Shall you kill us? What can you do? No, we don't accept your law because we are public, we are above parliament. Parliament is our servant, not our master. We appointed this parliament, not you. We appointed 550 MPs and 250 MPs. It is people of this country who appoint them, not you. You are only a voter in that level, nothing else. If people reject parliament, law means rejected. That's it. It is rejected. Finished. We don't value that. There are so many laws which have not been in operation. People didn't accept them. What shall you do? Shall you put whole country in jail? Just like you put whole Jammu and Kashmir in jail? Try to keep in balance of your mind. You are not honor of this country, people of this country, citizens of this country, honor of this country. They are honor. This is their wealth, not your wealth. You are having too long nose, too big mind, think that you can only think, others are fools. This is Bharat, India. This is not your home alone. This is not your family alone, nuclear family. This is people's home. This is people's family. People don't bother about persons like you. Many PMs have come and many PMs have gone. Who bothers about them? You are just a person, nothing else. It is your luck that you became PM and somebody became minister. This means you shall not listen to people. You are bound to listen to people. You did not talk to them. You are so big. You forwarded police to stop them. So big guys you are. You do not respect people of this country. You are above God. They have to take your permission. Oh my God. You did not take their permission. We came to vote. You don't take their permission. Oh, shall I talk to you about votes, my dear people of this country? You do not come to them to seek permission before meeting them. Just you folded hands and touch their feet for vote. And now they have to take your permission to see you. What a big man you are. Public, lakhs of public are there. They have to take your permission. Oh, you are so big. You are king of kings. You are Chakravarti. Even Ram used to talk to people and Krishna used to talk to people. What you are? You are nothing, a rat. You are only a rat. Nothing else. I am shame, really, I am having big shame. What sort of so-called leaders we have? They don't have any degree of shame towards own fault. Old ladies, veterans are there on roads standing and you are not talking to them. When you are saying they are my sisters, they are my mothers. Your mother applies to you for permission when you go to see her. She applies to you for permission to see you. What idiotic mind you have, believe me. And this police, bloody police, they act as if they are servant to ministers. You are servant to ministers. You fools. You are servant to ministers. You are servant to people of this country. Believe me, I never expected such leaders. Had he met people, his head would be high, his respect would be elevated. And he had gone to that place where these people are sitting, Shane Bagh, he would be a stalwart of politics, a stalwart of nation. Oh, see, okay, faisla or no faisla, decision on that is second issue. At least respect of people. When thousands of people sit one place and you go and meet them, you elevate your status because you respect people of this country. Though it is an emotional issue, no matter, but you respected them at least, you came to them. Then they may come to you 10 times, that doesn't matter anything. You visited them once, that should be big. Or 2 months, they have been there, you did not even care to visit them, and you are calling them bad women.
You're calling them anti-national. You're calling them, shoot them. What sort of stupid mind you have? I have every word to say. I don't want to say any bad word because you deserve that. You deserve that word. Your mind should be set right by throwing you out of power and then treating you as they have treated them. Only then you can understand what is treatment. You are not suitable for PM or minister post. Nowhere you are suitable because you are a laughing person. You are pendulum mind. You cannot treat people as yours. You are treating them as they came from another country. That's why you are treating them. People of Delhi taught you a lesson, but still you could not understand. You think people were interested in Kejriwal's victory? No. People did not elect Kejriwal. This is a misconception. And Kejriwal is also having a misconception that people elected him. No, never. People opted for democracy. People opted for cleaning that, removing that. People wanted confidence in them. People wanted to teach a lesson to Modi and lesson to these BJP idiots. That is what they did. This is what people wanted. They could be Congress, they could be someone else who could win. Doesn't matter. I do not consider victory of Kejriwal. Never. It's zero. Kejriwal did not win. AAP did not win. It is BJP. It is Modi. It is Amit Shah who have been defeated. Fact is that. Because it is stupidity of this government that created all these issues. If government creates unrest in country, you cannot call it government. Never. This is not a government we are having in office. Because they have not done anything till now which is in the interest of this nation. They have done all acts against this nation. It may be 370, it may be CAA, or all acts they have done are gone against nation. There's unemployment, there's GDP issue, there's economic issue, there's farmers issue, all issues that were in problems, that were in issue, that were in you can say questions. Since this government came to power, this legislature came to power, we have been facing same issues as augmenting up. You see 1.4 lakh crore license fee to be charged from few companies, telecom companies. Government did not have any concern, you see. Government did not bother about that. As if this is not money of government or public. Okay, keep them with you, no problem, keep money with you. This is what is meaning of silence, what meaning of not resorting to action. So you think this is a government of people? This is a government for those companies. This is a government for those Adani, Ambani, and Telecom, Airtel, and all that. Those companies have to pay back to revenue. And they kept silent. They kept silent, and they're selling government companies. They're selling government. Everything they are selling. You don't have money. You are not charging money from these people who are taking money from people. These companies are charging money from us for their services, and you are not interested to take money from them. What sort of government you are? You are a robber. Indirectly, you are in their pocket. They purchase you. This means is that. It is court only who brought this to attention of public. Public didn't understand that 1.5 or 1.4 lakh crore to be collected from these people. It's only Supreme Court that exposed this information. I don't understand. And Supreme Court one just said, we better block this Supreme Court. What comment do you want? I don't understand what sort of government it is. This government has some character or not character? I don't think they have any character. This is completely baseless, useless, mindless, characterless government. I don't understand why you tolerate them. I cannot understand this. Why opposition, why people have tolerated them till now. And why have they been silent till now? Congress, bloody fool. These oppositions, bloody fool. They are not talking of this money. 1.4 lakh crore. Are you sleeping, people? You are sleeping. People are not charging money from them. Government is silent. You too are silent. Are you also in line with them?
Why didn't you skip all this? Why only court has told this? Means you are allowing abuse of public money by these companies. And government allows that, you do allow that, parliament allows them. Why this was not issued in parliament? This is a question of 1.5 lakh crore. Why are you raising a issue? They are selling companies. Why don't you stop them? All are robbers. Time has come that we have to remove all political parties, all one to all. We are not interested in freebies. We are interested in developments. We are paying taxes. I don't want free water from university. Charge me minimum, not maximum. It's my duty to pay for services. You cannot get free. We are not that developed country who has surplus money and after all, you are not paying bill, but someone else is paying. Don't forget. Budget is there. Expenses are there. If you don't pay money, how shall government develop? State. Think of. From where shall money come? And you are not making house of your saving of water bill. You shall not make out of saving your electric bill. Why are you so happy with that? What is there to be happy with that? I don't understand this point. Really. Just for votes, if you are happy, fine. This is your country. You break it, you sell it. But ultimately, economy is economy. You know what's happening to economy? It is only because of all these freebies. And these freebies pay to industrialists also. These freebies pay to all these leaders also. Every leader is enjoying. They are enjoying car, houses, all these MPs. Car, houses, salary, telephone bill, this bill, that bill, 28 rupees thali and all that. They have no right for that. They are no right at all. But they are enjoying. We have to stop it. You have to stop banks. They have to recover money they have paid to industries. Why don't they recover money? All this is obvious. We are allowing loot of this country at every level. So once it is completely looted, where from you get money? You give free to public, you give free to industrialists, you give free to politicians, you give free to each and everyone, then you have no money with you. You take from IMF, you take from World Bank, you take from others, again you send them free, free and free. Where is solution in free? When your money is not here coming back in your hands, there is no rotation, there is no circulation, this circulation, how can you move? Why don't you understand this point? Why we are so happy and why these so-called stupid leaders are promising such? Why? Are you so rich? And why voter is so happy if something is free? I say, arrest these industrialists who did not pay back. Do not accept NPAs. Arrest them, recover whatever they have. We don't want them anything free. We do not want them free. Why should we allow them? Why should we allow these MPs everything free? 28 rupees thali. Why are you hungry? Are you beggar? What you are doing for country? You think you got big because you got votes? You think you got big because of MPs? Work as MP first. You don't know constitution. You do not know procedures. You don't know what public expects, public thinks. You never meet people. You never go to them to see them. What sort of MP you are? You don't know what's ongoing in Lok Sabha and Rajya Sabha. You don't know what people are talking. You are not found in your seat. You are not found in your home. Where are you found? In foreign country? These are burning issues. And issues can keep burning always. We have to control this fire. This fire cannot be controlled by blowing by mouth. This fire needs some ammunition, some tools, some utensils, so that water be filled in them and poured onto this fire. Can we? Can we become firefighters for such polluting environment of our political system? How long shall we move like this? If you consider today, we are not standing actually as nation.
We cannot compare ourselves to other nations also, no meaning of that. First of all, we should be stable people. We should have social unrest. No, we should not have social unrest. We should be social calm. But this is job of government to keep people calm. If government cannot talk to people, I condemn such government. It may be Congress or BJP, doesn't make a difference to me. When Andolan of Anna Lokpal Bill Andolan was there, it was running. There was a good interaction between public and civil society and government, and they had reached some conclusion because that government was government of thinking, government of concern. This government doesn't think that they are government of this country. They think they have their own imaginary world. Otherwise, PM would talk to people or minister would talk to people. They did not talk to people. They lapsed actually. They missed an opportunity. PM missed an opportunity and others missed an opportunity. If they cannot avail opportunity, they cannot understand what people are. I think they have no right to stay in power. If they are distant, if they keep distant from public, they are not public people. And MPs cannot talk to people. What a nonsense. MP also is very big in this country that he cannot talk to people of this country. For last 1.5 and more days, 50 days, this revolution has been ongoing and no MP has gone to see them. They are so big. You have to come to them. They are gods. You have to come to temple to worship them. Such idiot people should be kicked out. Believe me, this is engineer's world. I should kick them out. To such unholy people, to such anti-national mechanism people, they should be kicked out. They think themselves too big above people of this country. Really, I am surprised what sort of animal MPs we have and what sort of animal ministers we have. I should call them animals because they have no courage, no conscience, no mind. They do not respect people of this country, so I cannot consider them people. I cannot consider human because they are not treating others human. 15 kilometers after walk, people go to see them, women particularly, not ordinary women, veteran women, senior women, old ladies, go to see them. See minister, and minister doesn't want to see them. Minister says, I don't give you permission. Police says, minister didn't give permission. A day has come when people have to take permission from these ministers to see them. What a day. Thousands and thousands of people are on road and no permission to see them. We need permission from these big ministers to see them. They are not our ministers. They are British Empire ministers. They are American ministers. They are Gulf ministers. They are Far East ministers. What big people they are. They are above constitution. They are above public. They are honor. They are king. You have to touch their feet to take permission. Kick these people out. They require that treatment. Forget Gandhiwad. These people do not understand Gandhiwad. These people are criminals. They must be taught lesson. No permission to see veteran ladies. Shame on to you. They are citizens of this country. They are society of this country. 80 years old men, 90 years old men have to request you. You bloody minister. They have to request you to touch your feet to permission. You have no humanity in you. You are an animal. It was your duty to go and see them because you have paid for service to people. They went to see you. You didn't want to see them. What should I call you? Big leader? You are a fool. Super fool. That is correct word for you. You insulted Bharat public. You insulted me when you did not see public when they came to see you. Such a big you forward police always. Police stop them. Police is for you think? Police is serving you? Senseless ministers, senseless people, senseless legislators, senseless ministers. All shall be thrown out immediately. They are not worth good people. And Prime Minister giving green flag to private train nonsense Prime Minister, idiot Prime Minister. You are working for private parties. You are serving them. You are working for a money Adani, or you are working for me or others. Are you servant to Adani or money? Shame on to you.
Such people we have in this country who have destroyed this nation. And these bugs, only bugs, gobar filled here, bhusa filled in their minds. They cannot think. They are graduates, but they are illiterate. They are not thinking for nation, they are thinking for Modi. They are not thinking, they are thinking for Modi. Nonsense. Youth of this country. Well, anger is always there. When you see your country is breaking, your society is breaking, your people are breaking, you always get angry. After all, you are patriot, you are Deshbhakt. I cannot see my country facing such problems as created now. Lokpal was there, Anna was there, that bloody fool, where is he now? This bloody Kejriwal, what is he doing now? Only elected, that's it. What this bloody Congress they are doing now? All bloody politicians, nothing else. What they are doing? They are not working for people. They are working for themselves only. They all are interested only in seats and nothing else. Public is orphan. So public has to devise themselves leaders of this country. They will be called leaders, not these rascals. They are only interested in post, nothing else. I am abusing all politicians because I have started hating them. Really, I hate them now. These political parties and political leaders, I hate them. They are worth nothing in this country. Worth nothing. They can speak anything in election time. They can speak whatever you want to them. They will touch your feet. They will fold hands and they will rub their noses on ground for votes. But after that, they don't care for you. Really, it is nonsense. We elect such people. I don't understand when people shall open their eyes and minds that they never care for political parties and known leaders, but bring new leaders, unearth new leaders, discover new leaders and bring them to forefront. When shall they do this? I don't know that day. Why they forget constitution at time of election, I don't know. Why do we forget that there is something written in the constitution about how to vote and why to vote and whom to vote? We don't know. Nowhere it is written in constitution you have to elect from political parties or you elect from these people who are already in power. There is nothing written in constitution. Only written, there is no direction, there is no mandate, there is no right that you have to elect government, that's all. You have to elect prime minister. Nothing is as such, but still we think that way. We cannot change our way. We do not know reality. We just live in doldrum. We just living in darkness, and we cannot come out of darkness into sunlight. We cannot come, and that is our weakness. That is our problem. We cannot go to that way. We cannot think that way. That's our problem. Our stupidity that is, and we have to hold it, or else we will suffer. We will suffer forever. We cannot understand that. Again, I am reminding you, citizenship is not a joke. Everybody is citizen. Everybody's country whose no name is on vote list or who is not having vote list but expected to vote list. Every citizen in this country is honor of this country. Don't worry about Aadhaar card. Don't worry about all this. You have voter list. That's enough. Whatever court says, let them say. Constitution says clearly, whose name is existing on voter list, that person is citizen of this country. That's final. No need of further debate. The Constitution mandates that. Article 325 to Article 327, you can go and read and see what is written there. It's clearly written that you are person, citizens of this country shall constitute Lok Sabha, House of People. It is you who are going to constitute House of People and not government. You are not going to constitute government. It will be automatic formation. You are not going to constitute PM. It shall be automatic formation. Don't worry about that. I know today there is no election, but it's not question of election. It's question of an understanding whether or not you understand Constitution. That is the important point. Nothing else. I am interested that people should understand Constitution. Should not just stop at preambles. Should go inside. And there are about 7-8 articles that you should read. Article 1, that is the name of this country, which is Bharat or India.
Then you can go to 5 to 10 articles which says what is citizenship. You can understand that. Then you can move on to Article 51A. It says fundamental duties of citizens. So what are your fundamental duties? You know that you have to abide by Constitution, national flag, national anthem, all that, and you have to think about this country. You have to take part in struggles of wars, and you have to bring up science and technology. You know yourself, and you have to take care of this country. You have to save environment. You have to protect natural resources. And if you go further down to 74, you will find that PM shall be appointed by President and nothing else. PM is located head of council and nothing else. And if you go further down onto that, you go to Article 81, which says that you have to constitute Lok Sabha, which means you have to constitute MP and not Prime Minister. And then further, if you go to down on that, you will find Article 325 to 37, this election, which says you are citizen of that state, you are having a name on voter list. And if you go further down, you can read your state list, union list, concurrent list, panchayat, and all that, municipalities' duties. This is what you have to know, nothing more than that. If you know this much, you can understand. We can say judiciary is not your branch because that is a long procedure. Executive is government of that country. This is also different. Means you are not involved in directly. You are only involved to ministers. I'm sorry, to MP and MLAs, which are your representatives, your servants who should work for you. But unfortunately, it's not happening. And that is my concern, that you should have knowledge about that. With this, I can close this talk today. It's a small one. And I'll take tomorrow again for another issue. And that's a thank you very much, Bharat, Vande Mataram. Thank you guys very well.